guys, what's up? Welcome back, and in today's video I will explain about conditional expressions. So it is a one line shortcut for if else statement. It is also known as a ternary operator. It is similar to that. If you know any other programming language, you know the ternary operator. It is like that only. So you can print or assign one of the condition, one of the value based on a condition. This is the formula: value if true, and this is the condition you have to put here, else value if false. If this condition is false, this is the value. So it will print x if the condition is true, else it will print y if the condition is false. This is the formula. So let's take an example. I will make a variable num and I will assign the value 5, and I will check if the variable that I am making is positive or negative. So I will just directly print it first. So this is the formula. I will just cut, copy and paste it here, this here. Yeah. So in place of x, if this condition that I am putting here, if it is true, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी सो x प्रिंट होगा यहाँ पे, x जो यहाँ पे हमने लिखा है, अगर नहीं तो ये y प्रिंट होगा. मैं सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन सेट कर देता हूँ. If num is greater than 0, that means value is positive. So I will print here positive. पॉजिटिव एंड यहाँ पे अगर पॉजिटिव नहीं तो फिर नेगेटिव. नेगेटिव. if I run this, it will print positive because our number is positive here. And if I take it in minus, it will print negative. Negative. So I will take another example. I will print if the number is odd or even. So now I will change the value like 6, and I will assign the value in a result variable. Result is equal to, as you can see, we can print or assign one of the two value based on a condition. आप assign करके भी variable में इसको कर सकते हैं, print कर सकते हैं. So this is the formula, and here I will check if number is odd or even. To check that, we will divide with the help of modulus with the help 2, and is equal to, double is equal to, check if it is equal to 0, else. So first I will write here कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी सो वैल्यू इज इवन, एंड अगर ये गलत है देन इट इज ऑड. एंड इफ आई प्रिंट this, print the result. Okay. Yeah. It will print even because हमारा नंबर even है, 6 even होता है. और अगर मैं यहाँ पे 6 के जगह 7, and if I run this now, it will print odd. Yeah, it is printing odd. So it will print even if the condition is true, else odd. If num divided by 2 gives remainder 0, it will print even, which is true if it is true, else odd. So let's take another example. We'll make this comment. In this, let's take two variable. First a, which we will assign 6. Second b, let's go with 7. यहाँ पे 5 कर देते हैं. एंड यहाँ पे हम चेक करेंगे कि विच ऑफ दिस टू नंबर इज ग्रेटेस्ट, मैक्स नंबर कौन सा है. तो यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाते रहता हूँ, मैक्स नम इज इक्वल टू
सेम फॉर्मूला आई विल यूज, मतलब ये एक फॉर्मूला ही है, दिस इज द फॉर्मूला x, मतलब a is greater than b. If a is greater than b, print a, else b. So if I run this, oh, मैंने प्रिंट नहीं की वैल्यू, एक मिनट मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट मैक्स num. If I run this now, it will print 7 because 7 is greater. So in this case it is happening a is less than b, that's why it is printing else, because this is the condition is false now, so it is going to else. तो हमने मैक्स नंबर फाइंड किया 6 and 7 में से, which is b 7. So now let's find minimum number. So let's put our condition first. So we will check if a is less than b. If it is true, print a. If it is false, print b. And यहाँ पे मैं मिनिमम प्रिंट कर देता हूँ, min number. If I run this, it will print 6, which is the minimum number between 6 and 7, a and b. So as you can see, मैं को बता देता हूँ ये कंडीशन कैसे काम करते हैं. a प्रिंट होगा अगर ये कंडीशन ट्रू होगी. सो in max number it is false, that's why it is printing b, and in this case it will print a if the condition is true, same, but here condition is true, that's why it is printing b, else it would have been printed b, like in this. Okay, I will explain with another example. So let's make another variable age, where I will put, let's say 18, and यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, स्टेटस चेक करते हैं इफ यू आर अडल्ट और नॉट. स्टेटस वेरिएबल बना लिया, यहाँ पे अब मैं स्टेटमेंट पुट करूँगा. ओके, सो यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ अडल्ट फॉर दिस, या तो कंडीशन यहाँ पे पहले पुट कर देते हैं हम, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, print if this condition is true, it will print here x की जगह पे हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं अडल्ट, अडल्ट else child. एंड इसको मैं अभी प्रिंट करता हूँ स्टेटस, यहाँ पे स्टेटस, तो इट विल प्रिंट अडल्ट. ठीक है, हमने एज के लिया 18 और 18 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18, सो इट विल प्रिंट अडल्ट. और यहीं पे अगर मैं 18 के जगह यहाँ पे 14 या 13 ले लेते हैं, तो इट विल प्रिंट चाइल्ड, बिकॉज दिस कंडीशन हैज फेल्ड, ये कंडीशन फेल हो गया है, सो एल्स इट विल प्रिंट चाइल्ड. और ये कंडीशन ट्रू होता तो हमने देखा ही अडल्ट प्रिंट होता. एक और एग्जांपल लेते हैं, इस पर एक टेम्परेचर का एग्जांपल लेते हैं हम. तो हम एक टेम्परेचर लेते हैं, टेम्परेचर इज इक्वल टू, लेट्स से इट इज 30 डिग्री सेल्सियस. एंड यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एक और, वेदर, वेदर, where we will check if weather is greater than 25 degree celsius, so it is hot, if not then it is cold. Let's say if temperature is, यहाँ पे हम कंडीशन पुट कर लेते हैं, if temperature is greater than okay 30, it is hot,
else it is cold. And I will print the weather यहाँ पे. Okay, sorry, weather. वेदर ये आ गया. यहाँ पे वेदर प्रिंट करते हैं एंड आई फिर रन दिस नाउ. इट इज शोइंग कोल्ड क्योंकि इक्वल टू नहीं लिया यहाँ पे. मैं इक्वल टू भी ऐसे ले लेते हैं ऐसे. ग्रेटर देन इक्वल टू. देन इट विल प्रिंट हॉट. अगर ये कंडीशन ट्रू होगी देन इट विल प्रिंट हॉट. अगर ये कंडीशन फॉल्स देन इट विल प्रिंट कोल्ड. तो इफ आई टेक द वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने वैल्यू रख ली 25 and if I run this now it will show that it is cold. This is technically not true but for this example it is true. So I will take another example. We'll make this a comment and इस एग्जांपल में हम काम करेंगे यूजर रोल लेके कि what type of role you have. Yes, user role. So I will assign user role as admin. Admin and I will create an variable यहाँ पे with access level. कि how much access you have in this particular example. तो यहाँ पे मैं user role if it is equal to admin then you will be guaranteed full access. If you are user admin then you have full access of this thing. If you are not then limited access. Access and I will print this here. Access तो इन दिस केस हमने अपना यूजर एक्सेस यूजर रोल एडमिन रखा है. यहाँ पे हमको फुल एक्सेस मिलेगा. एंड इफ आई चेंज दिस टू गेस्ट then you will be getting limited access. Now you have limited access, so it will grant you full access if user role equal to admin is true. If it is false you will be getting limited access. Well everybody, this is what conditional expression is. It is a one line shortcut for if statement, if else statement. It is similar to the ternary expression operator which you do in other programming languages. It prints or assign one of the two value based on the condition. The formula is x if condition else y. X is printed when the value is true or it will print y if the value is false. So this is all about the conditional expressions. We will meet in next video. Tata, bye bye.